Hello everyone, I am Assistant Professor Zinkal Patel. Welcome you all to IT Tools for Business. Now, in unit number 3, I am going to explain another topic, that is data validation. So, today we are going to learn what is data validation, how to validate number, or we can say how to validate decimal number, then how to validate text length, how to validate date, how to validate drop down list box, right? So first of all, let me explain what is data validation. Now data validation is a feature in Excel that is used to control what user can enter into a cell. It means if we will if we validate a column, in that just we can enter only number, and that is between 1 to 99 only. So we cannot enter any other number that is out of 99. Okay, so let me explain another example. You could use data validation to make sure a value is a number, and yes, it is between 1 and 6, right? So make sure a date occurred in next 30 days, or make sure text entry is less than 25 character. So we can enter this type of data validation. Now let me explain data validation in Excel practically. Now if I want to validate this column, in that just we can enter a value between 1 to 99. So first you have to select that column, like just I am going to select that cell, then go to data, and in data tools one option is there, data validation. So here data validation prevent invalid data from being entered into a cell, right? So just click on that. In that first is used data validation. Now in data validation, first one is settings. In that data validation criteria you have to write. It means this cell allow right now any value. It means you can enter any value, any text, any data, any date. Okay, now but I'm going to specify a criteria, like criteria is allow whole number, and that whole number is between, right? अभी हम कोई और कंडीशन भी लिख सकते हैं, लाइक नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, but I select between. Then minimum number is for example 10, or we can say 11, and maximum number is 99, right? So click on OK. Now in this cell we can only enter number between 11 to 99. For example, I enter 22, then press enter, then it will be okay. But if I press 8, then see one error occur, that is the value you enter is not valid. Why it is not valid? Because you apply validation over this cell. Okay, so a user has restricted value that can be entered into this cell, right? Restricted value है between हमें क्या 11 to 99 ही enter करना है. So just click on retry. Now if I click 45, then it will allow, right? Now see, if I enter wrong value, right? So यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है वो भी हम चेंज कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने यहाँ पे कर्सर मूव किया वो सेल पे, तभी मुझे मैसेज मिल जाना चाहिए कि ये सेल में मैं क्या एंटर कर रही हूँ, ठीक है? तो वो कैसे करेंगे? सी, जस्ट अगेन सिलेक्ट दो सेल दैट यू हैव टू वैलिडेट, देन डेटा वैलिडेशन. नाउ इनपुट मैसेज में जाएंगे. इट मीन्स व्हेन यू आर गोइंग टू इनपुट एट वैल्यू, देन इट विल डिस्प्ले, राइट? लाइक
इफ़ आई राइट इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन देनी है? सो प्लीज़ एंटर नंबर बिटवीन 11 to 99, ठीक है, वो मैसेज देना है। लाइक सी, अगर मैंने कर्सर ये सेल पे मूव किया तो इन्फॉर्मेशन प्रिंट होती है, लाइक प्लीज़ एंटर नंबर बिटवीन 11 to 99, राइट। इट इज़ लाइक टूल टिप। टूल टिप मतलब अगर हम कोई भी आइकन पे लेके जाएंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होगी। सी, फिल्टर का टूल टिप डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। वैसे अगर शॉर्ट आइकन पे लेके जाएंगे तो शॉर्ट का टूल टिप डिस्प्ले हो रहा है, वैसे यहाँ पे सेल का टूल टिप डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। नाउ सी, ये एरर मैसेज जो मैंने बोला वो भी चेंज कर सकते हैं। कैसे? अगेन फॉर दैट यू हैव टू सिलेक्ट ऑल द सेल, then go to data validation. In that again data validation. Now error alert में जाना है। इन दैट आपको यहाँ पे सिंबल कौन सा लेना है, लाइक वार्निंग वो भी दे सकते हैं, या इन्फॉर्मेशन का सिंबल देना है वो भी दे सकते हैं। अभी मैं वार्निंग रख रही हूँ। टाइटल में दे रही हूँ मैसेज, ठीक है। एरर है अगेन मैसेज रॉन्ग इनपुट, प्लीज़ रिफर इंफॉर्मेशन, अगर मैंने ऐसा मैसेज दिया, ठीक है। ओके, नाउ इफ़ आई प्रिंट फॉर एग्जांपल 6, देन रॉन्ग इनपुट, प्लीज़ रिफ़र इंफॉर्मेशन, राइट। ये इंफॉर्मेशन को रिफ़र करो, ऐसा मैसेज दिया और ये आइकन भी चेंज हो गया, ठीक है। डू यू वांट टू कंटिन्यू? नो प्रेस करोगे तो वो वैल्यू हमें इरेज करनी पड़ेगी, राइट। बट अगर हमने यस किया ये मैसेज पे तो वो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। वैलिडेशन को हमने अलाउ कर दिया है, रेस्ट्रिक्शन को हमने अलाउ कर दिया है, ऐसा, ठीक है। समझ में आया? नाउ नेक्स्ट वन इज टेक्स्ट लेंथ वैलिडेशन। कैसे देना है? जस्ट सिलेक्ट दो सेल, देन डेटा वैलिडेशन पे वैलिडेशन। नाउ इन दैट सेटिंग्स में हमें क्या चाहिए? टेक्स्ट लेंथ। नाउ टेक्स्ट लेंथ बिटवीन मिनिमम मैक्सिमम, क्या मिनिमम 1 कैरेक्टर तो होना चाहिए और मैक्सिमम फॉर एग्जांपल 5 कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। 5 से ज़्यादा होगी लेंथ तो एरर आएगी। सो इफ़ आई प्रिंट Q 5 टाइम देन इट विल बी ओके, बट if I enter 6 character then it will not be okay, right? So that is text length. Now date को भी हम validate कर सकते हैं, like हमने यहाँ पे select किए सारी column, then data validation पे जाके any value की जगह पे हमें क्या लिखना है? date. date is between, is equal to, greater than, less than, राइट। हम कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, फाइन। फॉर एग्जांपल बिटवीन स्टार्ट डेट हमने दिया है 1 जनवरी 2021 टू 2 फरवरी 2021 तक एंटर करनी है, ठीक है। तो अगर मैंने एंटर की 3 मार्च 2021 तो वो एरर आनी चाहिए, ठीक है। फाइन, होप यू अंडरस्टैंड दिस डेट वैलिडेशन। नाउ ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स कैसे? नाउ उसको भी हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे, गो टू डेटा वैलिडेशन, इन अगेन डेटा वैलिडेशन। नाउ यहाँ पे एनी वैल्यू की जगह पे हमें क्या करना है? लिस्ट सिलेक्ट करना है और हमें लिस्ट भी देना है। लाइक अगर कॉम्बो बॉक्स आएगा तो उनमें से हमें, जैसे कि हम जनरली करते हैं मेल फीमेल, ठीक है। तो मैं दे रही हूँ FYBPA, FYSYBPA एंड TYBPA, ठीक है। ओके, नाउ सी, अगर हम सेल पे कर्सर लेके जाएंगे तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन का एरो आएगा ना, उस पर क्लिक करेंगे तो आएगा FYBPA, ठीक है। जो भी सिलेक्ट करना है हम सिलेक्ट कर सकते हैं, फाइन। लेकिन यहाँ पे इशू कब होगा? जब थाउजेंड्स ऑफ सिलेक्शन हो तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमें क्या करना है? वो सिलेक्शन को अलग से कॉपी करना है,
देन अगेन जहाँ पे वैलिडेट करना है वो सेल सिलेक्ट करो, डेटा वैलिडेशन पे जाओ, फिर यहाँ पे लिस्ट सिलेक्ट करो, और हम सोर्स भी दे सकते हैं, ठीक है। सोर्स पे क्लिक करोगे और सिलेक्ट करना है इतने कॉलम, ठीक है। सोर्स सिलेक्ट हो गया एंड ओके। तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, जो हमने सिलेक्ट किया वो सारा आ जाएगा, ठीक है। in this way we can validate our drop down list, right? Now here is one disadvantage, like if I delete this source value, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स में क्या होगा, वो भी ब्लैंक आ जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। फाइन, तो उसका ये एक डिसएडवांटेज है। फाइन, होप you understand data validation, right? Now today we complete data validation. Now if you have any query regarding this data validation, that you can tell me. Fine, thank you.